वाटर क्राइसिस तो आप सोल्व कर रहे हो, है ना, और काफी सारे जैसे आपने बताया और भी लोग इसमें लगे हुए हैं। बट जैसे अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इस टाइम पे वहां पर मतलब आप बाहर भी नहीं निकल सकते। इट इज नॉट, यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ इन द ओपन एयर। तो आप राइट। बाहर निकलना भी मतलब बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है जी अभी जी। पे। तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? लाइक यू हैव समथिंग इन माइंड? See, हमारा बॉम्बे में भी it's the same problem statement right now. So much of infra work is going. इतने road projects, so many new buildings being built at the same time. It's really bad quality air. You can see it. But the visibility itself is so poor across. हमने during COVID we had built of course that was for air disinfection के साथ हमने चालू किया था. Government ने हमें help किया था with some amount of soft loans and grants to start that work. And we had built a system which is pretty good. It is based on this is based on ionic discharge technology, and it combines the capabilities of an industrial system and brings it to a smaller domestic scale system. So it is able to remove particulate matter from air. It is able to destroy volatile organics and toxic such gases in air, and it is also able to neutralize pathogens. Our problem was that what was built was just too powerful for the domestic air purifier. ओके। So we did launch a few air purifiers back then. हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी एक प्रोवाइड किया था, एंड we reached out to government agencies. हमने उस वक्त बहुत सारे systems donate भी किए थे, of course with support from IIT Bombay and DST. We had donated it to a lot of hospitals, these kind of systems. ओके। But today we are primarily using it as we are trying to bring it back as a gas scrubber in selective evaporation based water treatment processes. So yes, solution hai. We just that it was built for an industrial setting. Maybe I'll take this suggestion and we'll see if we can do something and bring it back for the domestic setup. बिकॉज वाकई मतलब लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है दिल्ली या फिर किसी भी तरह के मेट्रो सिटीज में। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव देयर। Yeah. ओके। But I सो think that can be solved by a few policies like managing जो vehicular traffic है, public transports, or even more importantly, your the crop burning cycles. बर्निंग Uh, साइकिल्स, क्योंकि वो इस टाइम पे so काफी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है जो वहां हाँ पर। मतलब it I won't blame it alone, but it's a mixture of a lot of things. Problem is हमारा the thing is हमारा कोई भी problem आज की डेट पे एक किसी की वजह से नहीं है. छह सात प्रॉब्लम्स के छह सात इश्यूज मतलब छह सात चीजों की वजह से हैं, एंड वी आर अनेबल टू सॉल्व इट बिकॉज वी ओनली फोकस ऑन 2 आउट ऑफ 6. तो बाकी चार तो रहते ही हैं. बाकी चार रह जाते हैं। तो हमें पूरे जितने प्रॉब्लम्स जो उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं सबके बारे में अवेयर होना जरूरी है, और उस अकॉर्डिंग सोल्यूशन बनाना और उनके लिए पड़ेगा। सस्टेनेबल सोल्यूशन देना पड़ेगा. इट्स नॉट दैट कि हम बोल देंगे आप छह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप सॉल्व करो. हाँ। They also need alternatives on how they'll solve it. So there has to be significant thinking. हम्म। स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व टू गो इन कि हाँ इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ये सस्टेनेबल है ओवर द नेक्स्ट 20 years और 30 years और 40 years. लेट्स थिंक लॉन्गर. वी जस्ट डोंट थिंक लॉन्गर. हम या लोग सब एक साल के बारे में सोचते हैं, उसके बाद 5 साल में मतलब वी जस्ट डोंट प्लान एंड थिंक अबाउट वेरी लॉन्ग टाइम फ्रेम्स एनीमोर. यस। और क्रॉप बाइंडिंग का तो एक अच्छा सॉल्यूशन भी काफी लोगों ने बताया। एथेनॉल ब्लेंडिंग पे काफी यूज में हो सकता है, और वो आने वाले टाइम पे उसकी नीड भी काफी है, क्योंकि ऑयल क्राइसिस कभी भी आ सकता है जिस हिसाब से Yeah. मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है अभी। तो हो सकता है कि हमारे पास फिर से ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाए, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग इज अ गुड ऑप्शन टू हैव, Yeah. आई गेस, फॉर द सॉल्विंग द ऑयल जी. क्राइसिस एंड सॉल्विंग द एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम एज वेल। सो लेट्स सी कि वो कब इम्प्लीमेंट। पॉसिबली. ओके। जी उसके अलावा मैं थोड़ा सा आपकी नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप टॉक पे आते हैं। वो कुछ जी चीज जी. तो सबके लिए शायद बेनिफिशियल हो। जो आपने अभी जो स्टार्टअप्स किए हैं, उसके अलावा दो स्टार्टअप्स रहे हैं आपके, स्वाइप और वेक्टर एक्स, आई गेस, है ना? Yeah, we were in the founding team there, and of course we have all focused on our different journeys there, and that experience has helped all of us, to take better decisions. Yeah. एनी टू लेसन्स फ्रॉम दोज स्टार्टअप्स? Biggest lesson is financial discipline. ओके। Unit economics comes first, and your customer is bigger. आपके product बनने चाहिए. Customer feedback should be ingrained into what you're doing. The appreciation for that has grown over the years. I won't say we started with that knowledge,
but the appreciation that customers can give us good feedback because they are the users. Yes. उनको अगर एक चीज नहीं पता है तो मतलब हम we should not disrespect their intellect there. We should really understand what they're trying to tell us. Okay. Second is financial discipline. We don't pay heed to unit economics. We are always thinking about कि हम ये we will just grow much quicker. We'll increase our top lines. We will not focus on bottom lines at all. That is something that we have tried a lot to avoid at Indra. It's very important to have your products paying for the research over a period of time because आप पूरा India is a price sensitive market, तो आप R&D का पैसा सब पे लगा नहीं सकते. तो it's important to get good strong unit economics and position yourself the right way. Third is the team. Okay. Getting the right set of people to work with us. Of course, recently controversy हुई है 70 hours a week के बारे में. So that is there. But what I believe is qualitative work is very, very important. And people must be driven about it. It's not just about कि हाँ हम बहुत मतलब we are trying, but people have to be practical about what they're solving. And they must feel proud about their work. So getting the right kind of team there, people who are driven over sustained periods of time, and people who are practical about execution and implementation, which is बहुत critical है, team building point of view से. And last, I would actually say is that some of the mistakes, that is, you must pace your growth the right way. It is like this is something sometimes under financial returns ke pressure mein, we ignore the basics and we don't pace it right, and it becomes very, very detrimental for others. And of course, people have to do a lot of things to survive. So survival comes first. But if possible, we must pace our growth. Growth should not be at the expense of building sound economics. Not at all. Nowhere. But it comes back to bite you at some point. I'm not saying we have done everything the best way possible here, but we have generally made efforts to stay as close as possible to the. Of course, we have had fantastic people who have advised us over, and they have always told us कि कुछ भी हो जाए, आप यहाँ पर कितना financial exposure होना चाहिए, कितना risk होनी चाहिए. हम तो infra space में things can go wrong very fast if we don't adhere to them. So these are only 4 things, and I think every entrepreneur who has started out today knows that somewhere deep down. And I think it's not just him, his support, his family, his people around them, even the team, they all must support them with this. It's a team game. It's not a single entrepreneur or anybody who does it. In fact, in Indra, I would say everyone is a fantastic independent decision maker. We try to decentralize the decision making. We encourage people to take leadership roles, and they bring their own flavor, and each of them is conscious about this. So it allows you to build organizations in a very good sustained framework, and also generate leaders for the time upcoming period. Okay, that's great. That's a great, very good advice, I guess. So उसके अभी जैसे आपने टीम बिल्डिंग की बात की, टीम बिल्डिंग very crucial role in any startups or any business success. So जब हम किसी को हायर कर रहे होते हैं या कोई भी किसी को हायर कर रहा होता है, तो हाउ मतलब वो कैसे पहचाने कि he is or he will be the good team member to have in our team, कि अरे ये वाकई पैशनेट है, वाकई प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो मतलब वो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है इनिशियल स्टेज पे? देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि when people are coming in and when you're talking to them for the first time, nobody knows everything there, and when people are coming in also, we don't expect them to know everything. There are a lot of things. मतलब उनको इंदिरा के बारे में तो इंदिरा में रह के ही पता चलेगा चीजें, just a basic understanding. But people must do some amount of homework, at least the industry they're trying to get into. What is happening there? What are other people doing there? जो भी available है, a little understanding of that. But I also rely on one fact. I always ask people about their failures. मतलब कहाँ पर fail हुआ है, and failure से ज़्यादा important है कि how did they react to it? Why did it happen? Have they even thought about it after that? कि उसके what led to the failure? Did they identify the factors, and what were the corrective measures taken? एंड वहां पर दिख जाता है. मतलब आप सक्सेसेस पे कहानी बना सकते हैं, फेलियर्स पे कहानी फिलर दिख जाता है. मतलब यू आई वुड रादर हैव अ पर्सन हु हैज डॉक्यूमेंटेड देयर फेलियर एंड हु अंडरस्टैंड्स हाउ टू फेल एंड स्टैंड अप द नेक्स्ट डे देन अ पर्सन हु हैज हैड अ स्टेलर सक्सेसफुल रिकॉर्ड. सो वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर पीपल हु नो व्हाट देयर फेलियर, मतलब व्हाट लेड टू देयर फेलियर एंड हाउ दे fix that. We are more appreciative of that than a person who is only
talking about success. Okay. Nobody can be always successful. Nobody needs to be always successful. Successful, yes. So what are your strategies to deal with the failures? Just be cheerful about it. मतलब every failure is a learning curve. मतलब you know it when you start this, when you're on this journey. In fact, every member of our team knows it that कि 100 चीजें करेंगे तो 90 बार फेल होना ही है. तो काउंट कीजिए कि 90 कब बन रहा है, 91st तक. So we always have in the team कि यार एक काम करते हैं, जल्दी से 90 बार फेल कर जाते हैं ताकि 91st टाइम जल्दी हो जाए. So it's about how quickly you fail and how quickly you react and get up from it. That's important. And overall, if you're doing the right processes, if you have the right intent, you will eventually succeed. You just need to persist. You should not give up along the way. And as a team, it is possible. Just founders sometimes उनके ऊपर इतना burden आ जाता है, but in our case, the team has really stood up. मतलब situations where for me and Krunal and others have been tough, they have actually come and taken huge load off us and done that, and that is phenomenal. We learn from them every day. Okay, that's great to have. And one thing, अगर इमेजिन कीजिए कोई एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है जो कि अपना डीप टेक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है, कुछ प्रॉब्लम है जो कि ही इज ट्राइंग टू सॉल्व. सो उसको ना कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस है ना टेक्नोलॉजी का इतना एक्सपीरियंस है, तो ही और शी कैसे वो मतलब प्रोसीड कर सकता है, कैसे वो स्टार्ट कर सकता है? एनी सबसे इम्पोर्टेंट है टू डिफाइन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. नथिंग हैपेंस. सो आपने अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से डिफाइन किया, आपका 70 to 80% काम उधर ही हो गया, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या करना है वो पता चल जाता है. हम स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन ही बहुत जेनेरिक होती है. सो वी नीड टू नो व्हाट वी वांट टू सॉल्व, एंड दैट टेल्स अस वेयर वी नीड टू गो एंड वी गो नेक्स्ट. मतलब आपने सही डिफाइन किया, एंड नेक्स्ट थिंग इज देन गोइंग आउट इनटू द मार्केट एंड फाइंडिंग आउट वेदर इट इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल वांट, वेदर देयर इज स्केल पॉसिबल. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करके अगर ज्यादा लोगों के साथ है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल अचीवेबल, व्हाट इज द टैम अवेलेबल टुडे फॉर द सेम. वो टैम अगर बड़ा है, इट कैन बी अ लार्जर बिजनेस. सो पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि am I looking for a like entrepreneurship is linked with सबको, not everybody needs to be a unicorn. You need to define, am I solving this problem statement because I want, it's okay if I have a small balance sheet, and but it's a repeatable problem, it's solving this section. और आपको एक VC scalable model में जानी है जहां पर you are talking about global scale. So TAM भी उतना बड़ा होना चाहिए. If your TAM is not, and वहां पर आपका identification अगर गलत हो गया तो बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पिवट करना ही पड़ता है उसके बाद. सो दैट इज देयर. इट ऑल स्टार्ट्स विद फंडामेंटल्स. इट्स नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, एंड पीपल मस्ट नॉट बी शाई ऑफ गोइंग एंड टॉकिंग टू अदर पीपल. वेरी मोस्ट पीपल आर जस्ट शाई टू आस्क. आपको आपको जाना चाहिए, फेलो एंटरप्रेन्योर के डोर खटखटाने चाहिए, जबरदस्ती उससे टाइम निकलवाना चाहिए. आपको पूछना चाहिए कि यार ये टाइम में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है. गो टू अ मेंटर, hound them. I would use the word hound them, because you are going for the right reasons कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सर हेल्प कर दीजिए, या फिर 2 मिनट मुझे बता दीजिए. So that effort needs to come in. People, you ask a few people, and at the end of the day, when all of this has been accumulated, it's your gut feeling. Okay. What you are feeling, क्योंकि सबको right decision पता नहीं होता. कोई भी decision right या wrong नहीं होता. आप decision लेके उसे back कीजिए और right हो जाता है. Okay. सो मेंटर का मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है वहां पर भी, आई गेस. जी, मतलब आपको सारी स्किल स्टार्टिंग में पता नहीं है. बहुत सारी चीज एक्सपीरियंस से आती हैं, सीखनी पड़ती है. यू जस्ट नीड टू हैव एन ओपन माइंड. सो यू मस्ट हैव एन ओपन माइंड फॉर क्रिटिसिज्म. लेट पीपल टेयर यू अपार्ट, इट डज नॉट मैटर. ओके. एंड चूजिंग अ मेंटर इज आल्सो अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, आई गेस, क्योंकि ज्ञान, इट इज अ क्रिटिकल टास्क. ज्ञान कोई भी देता है, बट हाँ, जो राइट मेंटर चूज करना जो कि सही डायरेक्शन में हमें गाइड करे, वो कैसे चूज करे कोई? तो राइट मेंटर वो है जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है. सिंपल बात. एंड आई थिंक मोस्ट पीपल कैन रिकॉग्नाइज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होती है. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो है जो हमारे प्रॉब्लम को डाइसेक्ट कर पाता है और उसके साथ एक सोल्यूशन का अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है कि हाँ, आप शायद ये ट्राई कर सकते हो. एवरी कॉन्वर्सेशन मस्ट एंड विद अ टेक अवे कि ठीक है, ये हमने प्रॉब्लम डाइसेक्ट किया. खाली एक बंदा आके अगर बोल रहा है कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ही एनालाइज नहीं कर रहा है, या फिर आपको क्लियरली बता नहीं रहा है कि आपने क्या गलत किया, या फिर लोग हैं जो खाली आपने क्या गलत किया बताते हैं, उसके बाद टेक अवे क्या है, आपके माइंड में कोई सोल्यूशन है,
what to do next. अगर हम्म आपको आंसर नहीं पता तो can I talk to a few people, can I open up a connect, can I at least go back to the customer and talk. So ये होती है constructive criticism, where you ask the right questions or somebody guides you asking the right questions with open feedback. मतलब they must not be pleasing you, at the same time they must not be only putting you down. ओके So, and if somebody is doing constructive criticism, trust me, you'll feel good about it. वो human, we are humans, we are emotional people, we also have a good IQ, everyone. So people, you will know when somebody is doing constructive criticism. ओके दैट्स अ ग्रेट एडवाइस आई गेस। अगर कोई भी मेंटर है, अगर हमें वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर हमें वो दे रहा है, तो ही और शी कैन बी अ गुड मेंटर फॉर अस। Correct. गुड। Correct. कि आजकल ज्यादातर लोग या तो सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक देते हैं या फिर गालियां देके निकल जाएंगे। वो मिलना जो वाकई, वो मिलना important है। हाँ, कि जो आपके विजन के साथ अलाइंड हो और वाकई वो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में इंटरेस्टेड हो और आपको गाइड पर एंड में तो करना आपको ही है। करना एंड आपको। में तो करना आपको ही है, मतलब कोई भी कुछ भी बोले, करना आपको ही है। अगर आप बोलेंगे कि इसने मुझे ये फीडबैक दिया, उसने ये दिया, इसलिए मैंने ये किया, एंड यू आर डाउन, इट्स यू, ओनली यू हैव योरसेल्फ टू ब्लेम। सो वहां पर यू कैन नॉट पुश द बक ऑन एनीवन एल्स। सो दैट एंटरप्रेन्योर्स मस्ट रियलाइज वेरी अर्ली कि सबका सुनना है बट करना खुद का है। ओके दैट्स अ ग्रेट एडवाइस। और इसके अलावा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होता है या डिसीजन मेकिंग अप्रोच क्या होता है? क्योंकि कई बार होता है एज एन सीईओ आपको डिसीजंस बहुत सारे लेने पड़ते हैं, बट कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि यार इधर और बाइनरी में डिसीजन लेने होते हैं। तो हाउ डू यू चूज वन ऑफ दोज? देखिए, यू मस्ट हैव अ फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्रोच एवरीवेयर। मतलब जो साइंस में यूज होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, गो बैक टू द फंडामेंटल्स। आपको ऑलवेज यही पूछना पड़ता है कि इस डिसीजन से कितने लोग खुश होंगे, कितने लोग ना खुश होंगे। कोई भी डिसीजन में 100 लोग, सारे के सारे लोग खुश नहीं होने वाले। एंड आपको बस ये देखना है कि आप जितने लोग खुश हो रहे हैं वो आपके कंपनी के विजन के साथ, जो सबने रैशनली डेटा बेस्ड या फिर सोच के डिसाइड किया था, इज इट फॉलोइंग इनटू दैट? इफ यू आर नॉट स्ट्रेइंग टू फार अवे फ्रॉम योर विजन और योर माइलस्टोन्स दैट यू नीड टू अचीव, योर डिसीजन इज ऑलवेज क्लियर। हम गलती तब करते हैं जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हम सोचते हैं कि ओ, वो करता तो क्या हो जाता। हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोई भी एक चॉइस करके यू विल स्टिल सक्सीड। यू डोंट वेस्ट टाइम ओवर इट। You can't waste too much time. You need to decide. You need to back it up. Opportunities are immense. ऐसा मतलब lot of people come and tell you this is a lifetime opportunity, तुमने ये मिस किया। कुछ नहीं होता। हाँ Entrepreneurs create opportunities. Opportunities को आने की जरूरत नहीं, आप खुद create कीजिए। हाँ There are 7.8 billion people on the planet. How yeah, can anyone say कि opportunities नहीं आने वाले? Opportunities आने वाले। Problem statements इतने ज्यादा है। It's a हाँ question of how quickly you move through them. And always use first principles. Do not deviate too much from your own set course towards your vision. हाँ। और बिल्कुल सही बात है। और प्रॉब्लम्स की बात करें तो वी लिव इन इंडिया, तो हमारे पास Exactly. तो हर चौराहे पे नई नई प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है। जस्ट यू जस्ट नीड टू हैव ओपन आईज एंड ओपन माइंड बिल्कुल। to see the problems. I guess. So one last thing, any one problem that you want anyone to solve or you think that it is need to be solved, but you cannot work because you are too much occupied with your current venture. So any one problem statement that you want to give? Especially in water, I think the EPC style of work, especially in water. So there is, when you bring in people coming in from different sectors, the operations in water plants as well as their, uh, you know, the activities that go around different water plants, there is no standardization in that. Okay. And I think it can be standardized with data. Okay. मतलब राइट फ्रॉम प्लांट्स कैसे वर्क कर रही हैं कंटिन्यूअसली, व्हाट एक्टिविटीज आर डन अराउंड इट, व्हाट इज द लॉजिस्टिक्स सराउंडिंग दैट, what is the supply chain surrounding it, all of this. So people are trying to address different factions of this, but I think there needs to be a continuity with respect to the SOPs that are adopted across the spectrum, right from supply chain to the operations to the troubleshooting and then the corrective measure. So it can be a very data driven process which is standardized across different technologies. तो वो चीज पानी में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट mature sectors like automobiles have that. मतलब you will never see anyone deviate from those set measures, which is the reason why
scale is possible there. I think water, which is a fundamental resource required by 7.8 billion people, और सबको एक गाड़ी चाहिए, पानी लाखों लीटर चाहिए सबको, तो साल का, तो that is there. So I would love if someone wants to come there and bring in standardization in that part of the water sector, so that it allows a lot of other technology developers to latch onto that framework. Okay. Because there remains a lot of work that needs to be done. So हम लोग पूरे supply chain को अभी तक target कर नहीं पा रहे, and probably going forward, if nobody does it, we'll attempt doing that in water, not just for our technology alone, because today we are just doing a couple of things, but we will slowly expand into all the other activities surrounding this problem statement. So if someone wants to attempt doing that, we'll be happy to collaborate with them. Okay, that's great to have. और अगर कोई इंदिरा वाटर का प्लांट वगैरह लगाना चाह रहा है और कोई, तो it is possible to reach you to do Absolutely. Sales is with me, so I welcome everyone कि आप प्लांट लगाइए, मुझे कॉल कीजिए, बात कीजिए, अच्छा लगता है जब प्लांट लगाते हैं. बिल्कुल, I will put your handles, LinkedIn handle and your contact details Sure. description, so that if someone wants to reach you, if someone wants to solve this problem along with you or along with us, तो वो आपको रीच करे. और आई होप कि ये प्रॉब्लम जल्दी से सोल्व हो और बहुत और लोग निकल के आए साथ में इस मिशन को, इस विजन को कंप्लीट करने के लिए, और भी लोग जुड़ेंगे. सो इसी होप के साथ थैंक यू सो मच अमृत सर कनेक्टिंग विद अस. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमसे मिलकर. मुझे बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला. आई होप यू हैव एंजॉयड आवर कन्वर्सेशन एज वेल. बिल्कुल. Thank you so much for hosting me. And I'll just leave with the last statement that a green economy is not possible without a blue economy. And Indra is building that blue economy. So I urge everyone to join us in building that blue economy for a sustainable future. Yeah, me too, for the blue economy. Absolutely. Thank you so much. Thank you so much. Like see you soon, see you very soon. फिर से आपके साथ ये कन्वर्सेशन करने का, पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा. काफी सारी चीजें थी मैं चाहता था, बट ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम में कवर नहीं कर पाया, और बहुत ज्यादा भी हो जाएगा ऑडियंस के लिए एक ही एपिसोड में बहुत सारी जी. तो बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम. सो श्योर. हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Have a great day too. Bye. Bye.